नाउ आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज है। ओके, देखो द वर्ड इज व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। देखो इसमें हमें दो मेन वर्ड्स दिखते हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड द अदर इज साइंस। हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड पॉलिटिकल क्या है और ये वर्ड साइंस क्या है। ओके, फर्स्ट लेट्स हैव ए बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइंस और व्हाट इज साइंस। ओके, मे बी आपने 10th तक या एटलीस्ट आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक साइंस तो जरूर पढ़ा होगा और उसमें वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज साइंस। और अगर हम इसे एक सिंपल डेफिनेशन देखें, बेसिकली द साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, empiricism and verification. This is what the science is. So the science is the systematic knowledge that is gained through experience, observation, experimentation, empiricism and verification. So जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो ये जो हम इन वर्ड्स का नाम ले रहे हैं, experience, observation, experimentation, empiricism and verification, these are very relevant when it comes to science. Okay, so this is science, जिसमें हमने किस किस का बात किया, एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन, ओके, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिसिज्म। So this is what the science is. Now after having a simple definition of कि साइंस का मतलब क्या है, we will talk about the meaning of word political, कि जो political word है उसका मतलब क्या है। जैसे कि हमने politics में भी बात किया, we have talked about what is political। देखो जब हम politics की बात करते हैं, when we talking about the political, of course even जो modern thinkers हैं वो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि there is not much difference between political and the word politics. Okay, but इसके बावजूद भी first let's try to have a good understanding of what is the meaning of the word political. Basically a political word is derived from the Greek word, Roman word, Greek word, फिर उसके बाद French word, Latin word. Okay, these are the different words that try to explain from the Greek word politikos, from the French word, sorry I said Roman, not, it's not Roman, it's French word politique, then after that Latin word politius. Okay, so these are the words, and what basically this word means, political means, and what it's trying to say, that political means something related to citizens, affairs of the state, government, political power, authority, public policy and its formulations. Means यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि political जो है वो उस चीज को हम political बोलते हैं which has greater impact on citizens, affairs of the state, government, political power, authority, public policy and public policy formulations. Okay, और जब हम इसकी definition की बात करते हैं political की, there are certain words which are very important to understand while understanding the word political itself, कि जो political की जो machinery है, okay, वो किस तरीके से वर्क करती है, that and these words or these concepts are political structure, political functions, political processes and political system. मतलब कि यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम वर्ड पॉलिटिकल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये जो ये वर्ड है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम,
political functions and political processes. These are very important before we make an understanding of the word political itself. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये political structure क्या है. देखो, अगर हम किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट की हम बात करें, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. और ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बेसिकली रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर. ओके, बेसिकली कोई भी जो कंट्री है उसको उसकी फंक्शनिंग में या उसकी रेगुलेशन में इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड दैट्स व्हाट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज. So it refers to the institutions or groups and their relation to each other. इसके अलावा political structure is also about the pattern of interaction within the political system. It और इससे भी और important, it is the way in which the government works. कि जो गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है, that has lot to do with its political institution and particularly the political structure. Okay, I hope कि आपको political structure का थोड़ा समझ आया होगा कि what basically is the political structure. is after the political structure we have political functions. अब ये political functions क्या है? Political functions basically it is the activities of the government, interest groups, political parties and the works of the three important pillars of the गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है कि एक्टिविटीज गवर्नमेंट की और इंटरेस्ट ग्रुप्स की या पॉलिटिकल पार्टीज की, दिस इज व्हाट इज द पॉलिटिकल फंक्शंस. ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है. और देखो, इनको पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पॉलिटिकल साइंस की जो एक डेफिनेशन है उसको एक अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में हमें आसानी होगी ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आइडियाज. इसके बाद वी हैव द वर्ड पॉलिटिकल प्रोसेस. अब ये पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस और steps taken to achieve the growth of political structures and proper political functioning. मतलब political process का मतलब क्या है कि एक ऐसे actions, okay, और ऐसे steps जिससे क्या हो कि जो political structure है उसका growth हो. Political structure का मतलब हुआ political institutions का, और जिससे जो government machinery है या पूरी state जो work करती है. So that's what is the political process. इसके अलावा आफ्टर द पॉलिटिकल प्रोसेस देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉलिटिकल सिस्टम. अब ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक्चुअली द पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट. ये एक ऐसा सिस्टम है पॉलिटिक्स का और गवर्नमेंट का दैट डील्स विद सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का जो कि कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पेचीदा जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ डील करता है. और वो क्या क्वेश्चंस है? जैसे कि हमने जब पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी किया था तो उस टाइम पे हमने जब हेरोल्ड लैजवेल का नाम लिया था. आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ हेरोल्ड लैजवेल एंड पॉलिटिक्स. He says that the politics is about who gets what, when and how. Okay? अब उस डेफिनेशन की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी पॉलिटिकल सिस्टम में कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे हम बोल रहे हैं, इट डील्स विद द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्या हैं? वो these are the questions that who should have and who should get what, when and how. Okay? इन क्वेश्चंस को कौन डील करता है? इनको बेसिकली डील करता है the political system. Okay, I hope you have a basic understanding of these four words. Okay, और अगर आपको इन फोर वर्ड्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, then we can have the understanding of what is political science. Okay, अब now we will try to understand what is political science. Okay, कि अगर हम
if we combine these two words political and science, और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो now we will have the definition. Political science is the systematic and scientific knowledge. जैसे we said that it is a systematic study, scientific knowledge, systematic and scientific study and knowledge, and the study or scientific study of political structures, political functions, and political processes. Okay, within the framework of political system. Okay. To regulate the affairs of the state. I hope you are getting कि इसका definition क्या है, कि इसका एक simple अगर हम there are see अगर आप अपनी किताब में देखेंगे, if you look at the different sources, आपको politics और political science और even political theory भी, जो हम next class में study करेंगे कि what is political theory, इनमें बहुत जगहों में हमें similarities मिलेंगी. लेकिन what I tell you is that कि अगर आपको similarity भी मिले तो I don't think कि these are, of course they have lots of similarities, लेकिन इनमें difference भी है, कहीं ना कहीं difference भी है. That's why जब हम बोलते हैं कि we are a student of political science, we never call that we are a student of politics, or we don't call we are a student of only political theory. We say that we are a student of political science. So अगर हम कह रहे हैं कि हम we are a student of political science, it means there must be some definition of what the political science is. So this is what we are doing, that it is basically the systematic and scientific study of political structures, political functions, and within the framework of political system to regulate the affairs of the government. Okay, I hope आपको ये समझ आया होगा कि what is the definition. अब इसके बाद हम कोशिश ये समझने की कोशिश करते हैं कि देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग जरिए से या अलग अलग वे से समझने की कोशिश किया है. दे हैव ट्राइड टू गिव देयर ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस. इसमें फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन गिवन बाय पॉल जेनेट. He says is that political science deals with the foundation of state and the principles of government. Okay, देखो पहले हम definitions की जो thinkers की definition है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एक analysis देंगे कि what these traditional thinkers are trying to say. इसके अलावा we have another a political thinker who has given the traditional definition of political science, that is Garner, and he says is that political science begins and ends with the state. So he has given that political science revolves, it begins, it ends with the state. Okay, इसके बाद we have the definition of Leacock. He says is that political science deals with government. Okay, अगर हम इन definitions को देखें, there are so many other definitions also. I am taking only few of this considering the paucity of the time also. तो अगर हम इन डेफिनेशंस को देखें, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को देखें, इन थिंकर्स की डेफिनेशंस को देखें, तो इसमें एक दो चीजें जो है वो सिमिलर है. वो क्या है कि it is trying to say that the political science deals with the study of state and government. और ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन को कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन. लेकिन now in the modern times जैसे हम आगे next classes में जब when we will be studying the approaches of political science, we will be dealing with traditional approach and the modern approaches. The modern approaches are given by the modern thinkers, और उन्हीं thinkers की some of the definitions they have tried to explain what is political science. और उसमें सबसे पहले हम we will take the name of Harold Laswell, जिसका नाम आपने पहले भी सुना है. And what he says is that the political science as an empirical discipline is the study of sharing and shaping of power. Okay, देखो जो traditional definition थी, it is only talking about state and government, लेकिन जो modern definition है, it has gone beyond state and government. It has started talking about the power also, the sharing of the resources also. So what is saying that it's talking about the empirical discipline. It's an empirical discipline. Empirical discipline का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि which is basically based on empiricism. Okay, which has some lot to do with the data, lot to do with the surveys. Okay, means some kind of scientific outlook.
Okay, science, it's a empirical discipline that the study that studies the shaping and the sharing of power. Okay, this is given by Harold Laswell. इसके बाद we have the definition given by Robert Dahl. And Robert Dahl, what he says is that political system is any persistent pattern of human relations that involves to a significant extent rule or authority. Okay, देखो पिछली डेफिनेशन में we talked about power, and इस डेफिनेशन में हमारे पास वर्ड आ रहा है authority. Okay, authority, जिसके ऊपर हमने I think जब हमने लास्ट क्लास भी किया था तो we have talked a bit about what is authority, what is power. Okay, जिसके ऊपर हमने we already said that in the next classes when we will studying these concepts, especially these concepts power, authority and legitimacy, उसमें हम इसके ऊपर elaborately बात करेंगे. Okay, तो let's come back to the Robert Dahl's definition. He says that it's a persistent pattern. Okay, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, systematic study means it is something which is a continuous pattern of human relationship that involves significant extent the study of the rule and the authority. Okay, this is what the Robert Dahl is saying. इसके बाद we have Marshall Berman, और Marshall Berman की जो definition है political science को लेके, this is something very interesting. Okay, why? I will read the definition and I will tell you the definition, and after that we will have an understanding of that. It says that whenever you are or want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. तो यहाँ पे जो बर्मैन है वो क्या कह रहा है कि even someone says that I am not interested in politics. अगर कोई ये भी बोल रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो ना हो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या ना हो, but politics is interested in you. Okay, why? Because कि सोसाइटी में रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स तो हर एक को चाहिए ना, हर एक को चाहिए बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दिस इज व्हाट द रिसोर्सेज आर, हर एक को चाहिए ये फॉर लिविंग ए लाइफ. Okay, even Aristotle also said that man is a social animal, and he called that the politics or political science is a master science. Why he is saying this? Because he is saying that it is something we cannot stay away from. और even अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि that I am not interested in politics, this is again some kind of political position. Okay, जिसके ऊपर हम maybe in the next classes we will elaborating on these ideas also, what it basically talks about. So I hope so this is the modern definition or modern definitions of political science. So जो modern definition है, it has gone beyond state and government. It has brought individual, it has brought power, it has become authority into the framework of the political science. So that's why Aristotle, when he says that it's a master science, it is somewhere very important for us to understand that politics is everywhere. Okay, and politics is such an activity which brings a betterment to the life of the humans or even the non-humans as well. Okay, so these were the some of the definitions of politics, political science. और अगर अब इसके बाद if we try to make an understanding of that what is the difference between the definitions of politics and the political science, what are the difference between these two definitions. तो इसमें we can say that the politics is concerned with day-to-day actual, basically politics is about the actual activities of the government, whereas political science is basically the study and it's trying to give a theoretical understanding of the fundamental principles that deals with state and government. Okay, this can be the difference. इसके अलावा there can be another differences like politics may or may not differ from state to state. Okay, politics जो है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है. Okay, within the state or outside the state, लेकिन जो political science है, it's a universal phenomenon. Okay, it is something that the students and the teachers of political science, they study political science, but they do not practically or they do not involve themselves in the
practical politics. So this is what is the difference between politics and political science. And finally we can say that politics can change from place and it can differ from time to time, but political science is a universal phenomena. So this can be the difference. Lekin finally if we look at the modern political thinkers, वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. If we try to get a definition of politics, it is the same. If we try to understand the definition of political science, this is the same. So with this we can make an understanding of what is political science and what is politics. Of course there are so many similarities between what is politics, what is political science, but still there are certain differences which makes us to understand political science in a much better way. Okay, or after this now in the last lecture I got some of the questions which were asked by some of you, और जिसमें दो जो important questions थे, जिसमें एक आपने पूछा था कि which the books we should be consulting while studying political science, or this paper of political theory. और एक और था कि someone asked me to talk on some topics of international affairs or the international politics. I think that we will deal with later on, but let's talk about the books. My teachers used to tell me that it is always better to read one book 10 times than to read 10 books one times. So get a good book even in your other और बाकी जो भी जो आपके subjects हैं, get one standard book and try to read it again and again and try to grasp that book. Means you don't have to read it and complete it. कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो आप उसका आपको अच्छे से समझ होना चाहिए. समझने के बाद ये भी होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है वो समझना. कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जब तक आप वो चीज आपको नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, टिल देन योर स्टडी इज इनकम्प्लीट और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. ओके, और इट विल बिकम वेरी बोरिंग और डिफिकल्ट ऑल्सो. ओके, सो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ट्राई टू हैव ए प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, कि उसका प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे है. ओके, सो अबाउट द बुक, I personally suggest you to read an introduction to political theory by O.P. Gawa. It's a Macmillan publication. I have read that book, and there are so many other books also I can suggest you, but I won't suggest you so many books. But this book I have read since my graduation times, and this is really a good book. Okay, and you can always increase your power, increase your knowledge. But I suggest you to go through this. And thank you for carefully watching this, and I'm looking forward for the next lecture that will be on political theory. We will have an understanding of what is political theory, and then we will move forward to other topics. Thank you.